Okay, hello everyone. So welcome to lecture 12. So far we have discussed, like in the last lecture, we talked about adversarial search problems. जहाँ पे we talked about the games, in AI, what kind of games AI is good with, and like this two-player games. And उसके साथ साथ we also talked about minimax search algorithm and उसके साथ साथ हमने अल्फा बीटा प्रूनिंग के बारे में पढ़ा. Right. So these are the things we talked about in the last lecture. So in this lecture, we are gonna start with a different set of problems called constraint satisfaction problem. तो अभी तक जो भी हम पढ़ते आ रहे थे, फॉर एग्जांपल जैसे पाथ फाइंडिंग प्रॉब्लम थी कि हम सिटी ए से सिटी बी तक जाने का पाथ सर्च कर रहे थे, या फिर वी वर टॉकिंग अबाउट गेम्स जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट मूव पॉसिबल. तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा था उसमें कि एक एजेंट है यहाँ पे इस स्टेट में एंड इट इज ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स द बेस्ट एक्शन पॉसिबल इन दिस स्टेट आउट ऑफ ऑल द एक्शंस जो भी है, एंड दैट्स व्हाट वी वर डूइंग. बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स which which are kind of hard to model like this. For example, if we talk about like a sudoku. सुडोकू में क्या होता है कि देयर इज यू आर गिवन दिस 9 × 9 squares जहाँ पे आपको you need to fill some digits into these 9 small cells ताकि एंड सभी डिजिट डिफरेंट होने चाहिए. तो अगर यहाँ पे ये देखोगे कि एक स्टेट के जो सक्सेसर्स होंगे दैट विल बी टू लार्ज, क्योंकि हर सेल के पास अगर 9 पॉसिबिलिटीज है एंड देयर आर 9 × 9 to 81 cells, then there are like एक स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे एंड दिस विल lead into a huge search space. So we won't be able. So we can use the search algorithms, but that will take like exponential amount of time and might not even find a solution in a feasible amount of time. So that's where these constraint satisfaction problems comes in. We'll talk about how to formulate a problem in a CSP and how CSPs look like, and then we'll talk about a search mechanism called backtracking search, which is kinda used in which is very used very much used into the solving the CSPs. Okay, so let's start with the this constraint satisfaction problem, or in short, they are known as a CSP. So to motivate this, let me take an example, very famous example in the CSPs called graph coloring problem. I'm pretty sure you must have heard this problem, right? You must have heard about this problem in various scenarios like in discrete mathematics or maybe in some different subjects like graph theory or all. So this is a quite famous problem of graph theory. The problem name is graph coloring. So what is this exact problem? You are given a graph or you are a map, right? So graph coloring or map coloring. So you are given a map. So for example, this is a map of Australia. So this is a map of Australia, and you are given a map and you want to color the parts of that map. Just say, for example, this is one part of the map, this is another part of the map, this is another part of the map, these, and these. So we want to color all these parts of the map
सच दैट कोई भी जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट नेबर्स है, उनके सेम कलर नहीं होना चाहिए. So what's the problem? We want to color all the parts plus regions of the map given such that not to adjacent regions should have same color. That means कि अगर मैंने जैसे अगर मैंने ये तो टेकन हाइलाइटेड, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कुछ कलर दिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को, this is the, if I given this color to this, then इसके जो भी नेबर्स है जैसे नॉर्दर्न टेरिटरी, आई नीड टू गिव डिफरेंट कलर टू दिस, एंड तो एंड इसको भी फिर एक डिफरेंट सेट ऑफ कलर यू नीड टू गिव. So, so for example, this is almost same. So let me give the other color like this. This you need to give a separate color to this. So no two adjacent should have the same color. This is the graph coloring problem. So now this color can be given to this one because this is not adjacent to this. But इसके जो भी neighbors थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, these can't have the same colors, and we want to find such coloring with minimum number of colors or या तो in sometimes it is a problem like this कि given a map color it with the minimum number of colors or minimum type various colors, or we say कि आपको or given you are given some set of colors, for example जैसे तीन RGB red green blue, तो can we color map of Australia with these only. Okay, so this is one famous example which is used in the graph coloring or map coloring problems. So how can we model it as a CSV? So let's try to model this problem as a CSV. So to model any problem as a CSV, we need to define few things. So to model a problem as CSV, we need to define three things. क्या first, set of variables. So this is usually represented by using x. So set of variable is x, like x1, x2, xk. तो कि अगर कोई एक CSV है तो उसमें k variables है, तो we represent those variables using x1, x2 till xk, right? So this will be called as set of variables. अब अपना सॉल्यूशन क्या होगा कि हर वेरिएबल को हम कुछ वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं. तो
वी नीड अ सेट ऑफ की वैल्यूज कि कहाँ से वो वैल्यू ले सकता है हर वेरिएबल, राइट? तो वी नीड अ सेट ऑफ डोमेन्स डी। तो ये डी क्या है? दिस डी इज सेट ऑफ डोमेन्स D1 D2 एंड D2। तो जहाँ पे D1 क्या है? D1 is the domain of x1, D2 is domain of x2, and similarly dk is domain of x. So here you can represent dr is the domain of x5, right? Because हो सकता है कि हर वेरिएबल डिफरेंट जगह से वैल्यूज ले रहा हो या डिफरेंट हर वेरिएबल के लिए डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज अलाउड हो. So we need to define a domain separately for each variable. So there might be cases where all the variables take the values from same domain. So that in those cases we'll define a single domain for this CSP. But in general cases, the variables can take the values from a different set of domains. So therefore, we need to define a different set of domains or different domain for each variable. So we got the set of variables, set of domains, and the last but not least, set of constraints, which is C. तो तो जो set of constraint है, this will be represented using C, which is एक तरह से क्या है? एक set of constraint. So this will be like this, where let's suppose कि एक constraint is on the two variables x1 and x2. तो अगर जैसे किसी constraint में दो variables आ रहे हैं x1 and x2, तो those are the variables जो आ रहे हैं and comma what are the constraint exactly. So these are the variables participating in the constraint and what exactly constraint is कि इन दोनों की values पे क्या restrictions है. तो constraint is simply the restrictions on the, so constraint is simply restrictions on values a collection of variables can take. Okay, so for example जैसे यहाँ पे x1 और x2 है, तो if I say कि x1 can't be equal to x2, that means कि जो भी वैल्यूज हम लेंगे x1 और x2 के लिए, और x1 के लिए वैल्यू आप फॉर एग्जांपल अगर x1 को a रख रहे हो, तो x2 can't be equal to a because x1 और x2 की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए. This is one of the example of the constraints. So there might be other constraints. We'll talk about various type of constraints जो आगे हम पढ़ने वाले हैं in different type of CSP. ठीक है? So these are the three things we need to define to model any problem as a CSP. So let's see an example for this our graph coloring problem. So how can we model it? So we know that we need to define three things. One is set of variables. So set of variables. तो यहाँ पे set of variable x क्या define कर सकते हैं? तो variables हम यहाँ पे क्या क्या define कर सकते हैं? We can give all these जो भी यहाँ पे ये है, since हमें किन को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, हम रीजन्स को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, कलर असाइन कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट गिव देम द वेरिएबल्स कि दिस इज माय x1, दिस इज माय x2, दिस इज x3, दिस इज x4, दिस इज x5, दिस इज x6 and this is x7. So I can give these or I can represent my variables as these regions in the map. So I have the variables, set of variables are Western Australia. So let me represent it as a short form Western Australia.
नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया एंड Tasmania. So these are the different set of variables, or these are the 7 variables that we have defined. So this is my x1, this is my x2, this is my x3, x4, x5, x6, x7. Okay. Now, set of variables we have defined, set of domains, D. तो सेट ऑफ डोमेन क्या है कि क्या क्या वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास 3 ही कलर है सिर्फ, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. लेट्स सपोज आई हैव ओनली दीज 3 कलर्स. तो उस केस में क्या क्या होगा डोमेन हर वेरिएबल का, ईच वेरिएबल. तो आई कैन आइदर कलर इट विद रेड, आइदर कलर इट विद ग्रीन और कलर इट विद ब्लू. इसके पास भी कलर इट विद रेड, ग्रीन और ब्लू. राइट. तो हर वेरिएबल के पास सिर्फ 3 ऑप्शन है. तो व्हाट्स द डोमेन फॉर x1? तो x1 इज रेड, ग्रीन, ब्लू. x2 के लिए भी रेड, ग्रीन, ब्लू. x3 के लिए भी रेड, ग्रीन, ब्लू. और सबके लिए रेड, ग्रीन, ब्लू. राइट. तो all in this example all the variables have the same domain. So I can, in short, I can also represent DIE simply RGB. Huh? So this is R, this is G. So this is the set of domains, and the third thing they need to define is set of constraints. Constraints. Right. So what are the set of constraints? Set of constraints C is कि कोई भी जो नेबर्स है वो सेम कलर में होना चाहिए. राइट. तो जो नेबर्स कौन कौन से हैं, जैसे दिस इज द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज नेबर विद नॉर्दर्न टेरिटरी एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया. राइट. तो दैट मीन्स कि जो इसका कलर है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का और नॉर्दर्न टेरिटरी का, इनका कलर सेम नहीं होना चाहिए. तो इनके लिए क्या कंस्ट्रेंट्स आएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्दर्न टेरिटरी can't have the same color. Right. So this is the expanded form of the constraint, but जैसे तो क्योंकि these are the variables जो उसमें participate कर रहे हैं constraint में, and this is the exact constraint. तो this is the detailed form, but इसको हम shortened notation में भी लिख सकते हैं. जैसे दूसरा constraint जो था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सिर्फ इतना ही अगर हम लिखें तो भी दैट्स मोर देन इनफ, बिकॉज इससे हमें समझ आ जाएगा कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी कलर सेम होना चाहिए. राइट. तो आई कैन जस्ट राइट इट इन मच मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नॉट इक्वल टू नॉर्दर्न टेरिटरी. राइट. एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया शुड नॉट बी इक्वल टू साउथ ऑस्ट्रेलिया आल्सो. तो WA नॉट इक्वल टू साउथ ऑस्ट्रेलिया and Northern Territory shouldn't be equal to South Australia and Queensland. And T shouldn't be equal to South Australia and T shouldn't be equal to Queensland. And South Australia किसके साथ ये होना चाहिए, Queensland के साथ. तो ऐसे नॉट इक्वल टू Queensland
SA not equal to LSW and SA not equal to Victoria. ठीक है और ठीक है तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्वींसलैंड के लिए क्या क्वींसलैंड के लिए क्या क्या कलर्स पॉसिबल नहीं है क्वींसलैंड शुड नॉट इक्वल टू एनएसडब्ल्यू and NSW should not equal to Victoria. Okay, so I think we covered all of the constraints. So these are the set of constraints. But what if I give you, what if I add another constraint? Okay, so this is the how we define. But what if people of South Australia does not like color green? So how can we include this constraint in the set of constraint? Simply हमें क्या करना होगा एक simply what we need to do we can simply add another color key SA should not be equal to green ताकि that can satisfy the our constraint. So this is one example of the CSP. To model any problem as a CSP we need to define simply three things: set of variables X, set of domains T, and set of constraint C, and we are done. Okay, so यहाँ पे ही you realize कि there are multiple types of constraints. ऐसे constraints जहाँ पे two variables participate हो रहे हैं, right? There are two separate variables और ऐसे करते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही variable आ रहा है और दूसरी तो value है. तो इसके basis पे हम constraints को multiple types में divide कर सकते हैं. Called unary constraints जहाँ पे only one variable participate होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो साउथ ऑस्ट्रेलिया नॉट इक्वल टू ग्रीन, राइट? तो यहाँ पे दिस इज द वेरिएबल, सेकंड वन इज द वैल्यू, डोंट कंफ्यूज, राइट? इट्स अ वैल्यू नॉट अ वेरिएबल. बाइनरी कंस्ट्रेंट्स टू वेरिएबल्स का जो कंस्ट्रेंट होता है तो इसके सारे एग्जांपल जो हम कर रहे थे ऐसे नॉट इक्वल टू नॉर्दर्न टेरिटरी और नॉर्दर्न टेरिटरी not equal to South Australia, like Queensland. These are the examples of the binary constraints जहाँ पे two variables से काम कर रहे हैं. There is another example called global constraint जहाँ पे arbitrary number of constraints participate. Arbitrary number of constraints. So it is not all to global देख के ये लग सकता है कि सभी constraints, but नहीं, it doesn't mean not need to involve all the variables. ठीक है, तो more than two, but जरूरी नहीं है कि सारे. Okay, तो let's these are the various types of जो global constraint का एक बड़ा popular example है that is called all diff constraint.
only constraint. इसका एग्जांपल हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट दिस इज की व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स की values of all the variables participating in the constraint should have separate values. Okay, this is the different types of constraint that we talked about. So let me tell you one more thing about this. Now that we know about the constraints and all these, I can create something called a constraint graph. So what is this constraint graph? The constraint graph is simply, let me simply just copy it first. Okay, so what is a constraint graph? It is simply, ग्राफ से पता चल ही रहा है कि what, तो constraint graph is simply कि variables are the node and जो edges है इस ग्राफ के, those are the constraints. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है, डब्ल्यू ए, तो उसको मैं एक नोड बना दूँ, नॉर्दर्न टेरिटरी उसको एक नोड बना दूँ, साउथ ऑस्ट्रेलिया उसको एक नोड बना दूँ, क्वींसलैंड इसको एक नोड बना दूँ, एनएसडब्ल्यू उसको एक नोड बना दें, विक्टोरिया उसको एक नोड बना दें, टी को भी एक नोड बना दें. So these nodes are the variables. Okay. These nodes are the variables. And जो इनके बीच में edges होंगे, those will represent our constraint. So if we go through constraint, we say that W is not equal to northern territory, so we'll add an edge between these two variables की इनके लिए कोई constraint है, right? Similarly, W is not equal to South Australia, so we'll add one edge between these two. Northern Territory is not equal to South Australia, so we'll add one constraint edge between these two. Northern Territory not equal to Queensland, let's add one edge between these two also. South Australia is not equal to Queensland, add one edge between these two also. Southern Australia is not equal to NSW, let's add one edge between these two also. Southern Australia is not equal to Victoria, add edge. Queensland not equal to NSW, adding an edge. NSW not equal to Victoria, adding an edge. ठीक है, तो अब जिस यूनरी कंस्ट्रेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली इसमें नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, राइट? तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट ग्राफ. जहाँ पे नोड्स क्या है, वेरिएबल्स, एजेस क्या है, कंस्ट्रेंट्स. Okay, so let's talk about another type of problem called crypto-arithmetic problem in the C space. That's a very important one. So let me give an example of that. So what are these crypto-arithmetic problems? I think आप लोगों ने काफी बार देखा भी होगा ये चीज. इससे remember these kind of problems की जैसे आपको given something called
टू टू, इनको ऐड करने पे आई शुड गेट आर फोर। तो अगर ऐसा कुछ गिवन है तो वी वांट टू फाइंड आउट कि हम इन कैरेक्टर्स को क्या वैल्यूज असाइन करें, इन लेटर्स को क्या वैल्यूज असाइन करें कि ये जो सम है वो वैलिड सम हो। तो व्हाट आर द स्क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स कि यू आर गिवन दीज सम प्रॉब्लम्स कि जैसे यहाँ पे कुछ एक वर्ड होगा, यहाँ पे कुछ एक वर्ड होगा, एंड उन दोनों को ऐड करने पे देयर विल बी सम रिजल्टेंट वर्ड। तो वी वांट टू असाइन a unique value, unique digit to each letter. तो assign a unique digit, तो डिजिट्स क्या क्या है, 0 से 9 के बीच में जो भी है, डिजिट टू each letter, right? So that given sum is arithmetically correct. Okay, so this is one example. तो इसको अगर हम मॉडल करें, if we model it using CSP, तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होंगे, तो वेरिएबल्स would be a set of variables x क्या होगा, जो भी वेरिएबल्स है यहाँ पे which is o w t r u n f, ये वेरिएबल्स है, सेट ऑफ डोमेन्स d इक्वल टू o की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से 9 तक, 0 1 2 9 तक, w की वैल्यू भी 0 से 9 तक, सबकी वैल्यू। तो जो यूनिक टेक्निकल जो डोमेन है दैट विल बी, अगर मैं सभी डोमेन्स को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो डोमेन डी आई विल बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो दिस विल बी द डोमेन फॉर ऑल द वेरिएबल्स, सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो व्हाट आर दिस सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है दैट इज there should be a unique digit, एंड तो हर लेटर को डिफरेंट डिजिट असाइन होना चाहिए, दैट मीन्स कि वी कैन, तो each letter should have a different digit, ओके। तो डिफरेंट डिजिट अगर असाइन करना है तो इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में जो लिख सकते हैं दैट इज ऑल डिफ, जो कंस्टेंट है हमारा ऑल डिफ, दैट मीन्स ये सारे जो वैल्यू सारे वेरिएबल्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो वी कैन आई कैन सिंपली से ऑल डिफ w और w t r u f, okay, this is one constraint that should be there। उसके अलावा और भी कंस्ट्रेंट्स होंगे, और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे, जैसे दो सम किसके इक्वल होने चाहिए, आर के, तो ओ प्लस ओ शुड बी इक्वल टू आर प्लस, अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो उसके लिए भी, राइट। तो 10 टाइम्स कैरी अगर कुछ जनरेट हो रहा है तो C0, अगर यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ तो अब ये कैरी किसमें ऐड होगा, W वाले इसमें, राइट। यहाँ से जो भी
कैरी जनरेट हुआ है दैट विल बी एडेड हेयर, एंड यहाँ पे जो भी कैरी जनरेट हुआ है यहाँ पे, यहाँ से जो कैरी जनरेट हुआ वो ये है। तो C0 प्लस W प्लस W इक्वल टू U प्लस 10 टाइम्स carry 1 प्लस T प्लस T इक्वल टू O plus 10 times carry 2 and carry 2 equal to f. So all these are the set of constraints. These are known as the test arithmetic problems. So there are lot more of these problems that are very popular in exams also. You just simply need to find a solution for these. What should be the letter assigned to O, what should be the letter assigned to W, what should be the letter assigned to T, R, U, F, so that we get this sum correct. So another popular example of this is this and more. So we need to assign some values to these, and for example अगर मैं इसके लिए एग्जाम कुछ values assign करूँ तो I can assign the values. तो जैसे S को you can give 9, E को you can give 5, N को you can give 6, D को you can give 7, E को 5, R को you can give 8, O को you can give 0, M को you can give 1, right? तो I को you can give, Y को you can give 2, right? जैसे 7 प्लस 5 2, 1 एक कैरी जो आएगा, 6 प्लस 8 प्लस 1 कैरी 15, तो E की वैल्यू जो 5 थी वो सेटिस्फाई हो रही है, 1 कैरी, तो 1 प्लस 5 6, तो N should be 6, 9 प्लस 1 0, तो O की वैल्यू 0 आ रही, एंड N should be 1, तो कैरी नॉट इक्वल. These are this. I have I had the values written with me, so that's why I was able to write directly. But that doesn't. This is not that easy. You just need to try few values and then find this. So if you are lucky, just first time में आपको सही values मिल सकते हैं, या फिर you need to try more or more. Try have to do more and more trials to find the correct value. So we'll talk about how to solve these kind of CSPs, how to assign values to variables, ताकि we can find the solution in much more efficient manner, right? So that is known as something called an algorithm for this searching a solution for CSP is known as a backtracking search. We'll talk about that next. But before we do, so let's take another example called exam scheduling problem. So what is this exam scheduling problem? You are given a, so, so let's suppose there is this university, and जहाँ पे student 1 is taking 3 courses A, B or C. कोई issue नहीं. Student 2 is taking course B, B, E. Student 3 is taking course C, E, F. Student 4 is taking E, F, G. So there are these 7 courses floating into the university, and the 7 courses are being offered in the university, and these 4 students are taking these courses or these classes. Now university wants to organize the exams for these courses, right? तो यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 3 स्लॉट्स एग्जाम्स अलॉट करने के लिए, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी कैन
schedule as many as exams it want in the one on one day itself, like कि मंडे के दिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्जाम शेड्यूल हो. University can schedule multiple exams on Monday also, multiple exams on Tuesday, and multiple exams on Wednesday. But the constraint is कि if a student is ex- exams for all the subjects of a student should be scheduled on different days. But why? Because जैसे अगर आपने इन तीनों को सेम ही डे पे या फिर ए और बी को सेम डे पे असाइन कर दिया इसको, तो दिस स्टूडेंट वन वॉन्ट बी एबल टू गिव एग्जाम्स फॉर वन सब्जेक्ट, राइट? क्योंकि एक दिन में दो एग्जाम्स थोड़े ना दे सकता है सेम टाइम पे, तो इट कैन आइदर गिव एग्जाम फॉर ए एंड और आइदर गिव एग्जाम बी. वी आर अज्यूमिंग दैट ये एग्जाम्स रन्स होल डे, तो अगर कोई एग्जाम शेड्यूल हो रही है मंडे को, तो इट विल टेक द एंटायर मंडे फॉर दैट एग्जाम. तो दैट मीन्स कि स्टूडेंट ए के लिए जो एग्जाम्स है ए और बी सी, दैट स्टूडेंट बी शेड्यूल्ड ऑन द सेम डे. बट फॉर एग्जांपल, लेकिन जैसे we can schedule A and E on the same day, right? Because कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है जो ए और ई साथ में ले रहे हैं. That means कि I can schedule A or E on the same day and there won't be any conflicts on that, क्योंकि स्टूडेंट ए जैसे वन है वो अपना एग्जाम ए देता रहेगा और टू है वो अपने एग्जाम ई देता रहेगा, पैरेलली देता रहेगा, and there will be no constraints. So how can we model this problem as a CSP, and how can we find a solution or a valid assign slots for each exams? So how can we do that? What will be our variables here? What will be our domains? And what will be the set of constraints? Okay, so what will be our variables? Set of variables. तो किन किन के लिए हम शेड्यूल, किन को हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं? इनको, एग्जाम स्लॉट्स को, राइट? So these will be our set of variables. Set of variables A, B, C, D, E, F, G. Set of domain. तो यहाँ पे भी all these variables can take same values Monday, Tuesday and Wednesday. तो set of domain जो सबके लिए सेम ही होगी, that will be Monday, Tuesday and Wednesday. Right? So this is the all DI सभी के लिए सेम ही रहेगी. And set of constraints. Rewrite it. Date self and थोड़ा सा इसको. Okay. A can take exams on Monday, Tuesday and Wednesday. B के लिए भी Monday, Tuesday and Wednesday and so on. Monday, Tuesday and Wednesday. So DI in short form is
Monday, Tuesday, and Wednesday. Set of constraints C equal to A should not equal to B, right? क्योंकि A और B की एग्जाम साथ में नहीं हो सकती, क्योंकि स्टूडेंट वन के लिए दोनों सेम ही है। और A नॉट इक्वल टू C, B नॉट इक्वल टू C, स्टूडेंट वन जो भी एग्जाम दे रहा है वो सेम डे पर नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली स्टूडेंट टू जो भी एग्जाम दे रहा है वो सेम डे पर नहीं होनी चाहिए। तो B नॉट इक्वल टू D, B not equal to E, and D not equal to E. Similarly, student 3 के लिए C not equal to E, C not equal to E, E not equal to F, and C not equal to F. Student 4 के लिए E not equal to F, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट? तो हमें बार बार कवर करने की जरूरत है नहीं, and E not equal to G, F not equal to G. These are the constraints for all. If we create our constraint graph for this, so we can create that also. What are our variables? So our variables are A, B, C, D, E, F, and G. And set of constraints क्या है? A should not equal to B, A should not be equal to C, and B not should not be equal to C. B not equal to D, B not equal to E, and D not equal to E. C not equal to E, E not equal to F, and C not equal to F. E not equal to G, F not equal to G. So this is our constraint graph. So how can we find a solution for this? Like how, right? तो इस प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है। आई वांट टू, तो सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या है? सॉल्यूशन इज कि मुझे हर वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करना है ताकि वो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करे, कोई भी कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आर दोज वैल्यूज? ए कहाँ पे शेड्यूल किया जाएगा, बी कहाँ पे शेड्यूल किया जाएगा, राइट? तो let's try to find this solution for this example only, and that same approach can be assigned to any other variables. So let me just copy it here on a different page. Okay. Oh, see. Okay. I should have moved it a little further. Okay. तो अभी के लिए क्या क्या वैल्यूज हो सकती है सबके पास? मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. These are the three values that can be assigned to any variable, right? So right, this is our domain for each variable, so we can assign any variable value to each of them. So let's start with the a. तो a को कौन सी वैल्यू असाइन करें? मंडे असाइन करते हैं. वी आर असाइन a मंडे टू a. अगर हमने a को मंडे असाइन कर दिया तो लेट्स चेक द अदर वेरिएबल. कौन सा है? b. So we'll kind of run the DFS. We'll start with one variable. We'll go to the other variable, then keep following that path
until we can't reach any path, but can't reach any further or we find any conflicts. That's where we'll start thinking of different ways. तो अगर एक को मैंने मंडे साइन कर दिया तो बी को क्या साइन होगा? मंडे तो साइन नहीं हो सकता। अगर मैंने बी को मंडे साइन कर दिया तो क्या होगा? दीज टू विल हैव सेम वैल्यूज, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट कांट बी मंडे। तो मंडे साइन नहीं कर सकते, क्या साइन करते हैं? ट्यूसडे। लेट्स ट्यूसडे करके साइन करते हैं। तो बी को ट्यूसडे साइन किया, गुड। ट्यूसडे से कॉन्फ्लिक्ट कहीं नहीं आ रहा, तो गुड। लेट्स मूव ऑन टू डी। डी को क्या साइन करते हैं? मंडे। मंडे से कुछ कंस्टेंट आया नहीं, गुड। डी को मंडे साइन हो गया, राइट। नाउ लेट्स गो फॉर ई। ई को क्या साइन करें? मंडे। बट अगर ई को मंडे साइन करते तो वी रियलाइज कि यहाँ पे कंस्टेंट आता है, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, तो हम मंडे नहीं साइन कर सकते। अगर मंडे साइन नहीं कर सकते तो व्हाट कैन वी डू? रिमूव मंडे एंड लेट्स असाइन ट्यूसडे। ट्यूसडे साइन कर दिया। ट्यूसडे वर्क कर रहा है क्या? ट्यूसडे से यहाँ पे तो कोई कंस्टेंट नहीं आ रहा, दिस इज फाइन, बट यू रियलाइज कि यहाँ से कंस्टेंट आ रहा है, राइट। बी और ई की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, बट if we assign e to Tuesday, it will be create a problem. So we can't assign Tuesday also. So what we need to assign? Wednesday. Wednesday से कोई यहाँ पे भी कंस्टेंट नहीं आ रहा और यहाँ पे कंस्टेंट आ रहा, गुड। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वेरिएबल सी। सी को क्या असाइन करें? लेट्स असाइन मंडे। मंडे असाइन करते हैं तो क्या इशू है? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू सेम नहीं आ सकती, तो वी कांट असाइन मंडे। लेट्स असाइन ट्यूसडे। इफ यू असाइन ट्यूसडे तो ये रियलाइज कि यहाँ से कंस्टेंट्स आ रहे हैं, राइट। बी और सी की वैल्यू भी सेम नहीं हो सकती, तो ट्यूसडे भी सेम हो सकता। लेट्स असाइन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे इफ यू असाइन देन यू रियलाइज कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ई और सी की वैल्यू भी सेम नहीं हो सकती, एंड तो सी को वेडनेसडे में असाइन कर सकते। दैट मीन्स कि नो वैल्यू फॉर सी, राइट। दैट मीन्स कि अगर हम इस असाइनमेंट के साथ कंटिन्यू करें भी आगे, एफ और जी को वैल्यूज असाइन भी करें, तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि सी को कोई वैल्यू असाइन कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर पा रहे हैं इसे, तो दैट्स एन ह्यूज प्रॉब्लम। We will won't be able to find a solution for our CSP. So what we'll do, we'll simply backtrack कि इससे पहले हमने कौन सा वेरिएबल असाइन किया था? ई। विल चेक कि ई को कोई डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं क्या। अगर ई को कोई डिफरेंट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते तो इससे पहले जो आया था उसको कुछ डिफरेंट वैल्यूज असाइन करके देखते हैं। अगर वहां से डिफरेंट वैल्यूज के साथ we'll again move forward. Okay, so let's take a step back. E के लिए कोई डिफरेंट वैल्यू है क्या? ई के लिए वेडनेसडे था, वेडनेसडे के अलावा कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो लेट्स टेक अनदर स्टेप बैक। हाउ अबाउट डी? डी को कोई दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन असाइन डी को मंडे नहीं असाइन कर रहे, ट्यूसडे असाइन कर सकते हैं। अगर ट्यूसडे असाइन करते हैं तो देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ट्यूसडे असाइन नहीं कर सकते। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ट्यूसडे का असाइन नहीं करते, क्या कर सकते हैं? वेडनेसडे, राइट। लेट्स ट्राई टू असाइन वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं क्या? यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, गुड। तो लेट्स मूव टू द अदर वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? ई। ई को क्या वैल्यूज असाइन कर सकते हैं आप? वेडनेसडे तो है, तो वेडनेसडे असाइन नहीं कर सकते, तो लेट्स स्टार्ट असाइनिंग वैल्यूज टू ई। तो क्या असाइन करते हैं? लेट्स असाइन मंडे। मंडे असाइन करने पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है क्या? यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है,
यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं, वो तो मंडे के साथ वर्क कर जाएगा। तो ई मंडे फॉर ई, लेट्स गो टू सी। सी को क्या साइन करना, मंडे, राइट, लेट्स असाइन मंडे टू सी एंड वी रियलाइज कि मंडे की वजह से यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो मंडे इज नॉट अ गुड चॉइस। तो लेट्स रिमूव मंडे, लेट्स असाइन ट्यूसडे। इफ वी असाइन ट्यूसडे देन वी रियलाइज कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो वी कांट असाइन ट्यूसडे ऑल्सो। तो बचा क्या ऑप्शन, वेडनेसडे। वेडनेसडे से यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहाँ पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और यहाँ पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो दैट मीन्स कि वेडनेसडे इज ए गुड सॉल्यूशन फॉर सी। तो रियलाइज दिस कि पहले जब हम यहाँ पे इसको हम मंडे असाइन किए थे डी को, तब ये पॉसिबल नहीं था। इसको मंडे असाइन किए थे तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता था और नो सॉल्यूशन वालते, राइट, फॉर सी। बट नाउ जैसे वेडनेसडे के साथ वर्क कर रहे हैं, we found it's a solution for it, a valid assignment. So let's continue again, हो सकता है आगे जाके फेल हो जाए। तो let's assign f, f को क्या असाइन करते हैं, let's assign मंडे, या मंडे असाइन करते तो ये रियलाइज कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो मंडे कांट बी देयर। लेट्स assign ट्यूसडे, ट्यूसडे असाइन कर सकते हैं क्या, लेट्स सी, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं, तो ट्यूसडे इज फाइन, तो f को ट्यूसडे असाइन हो गया। एंड लेट्स टॉक अबाउट जी को क्या करें, मंडे असाइन करते हैं। मंडे असाइन किया तो क्या इशू है, दिस विल बी ए प्रॉब्लम, दिस विल बी ए कांस्टेंट, तो मंडे नहीं हो सकता। लेट्स असाइन ट्यूसडे, इफ वी असाइन ट्यूसडे देन वी रियलाइज कि दिस इज अ प्रॉब्लम है, तो ट्यूसडे पे असाइन नहीं हो सकता, बट वी कैन असाइन वेडनेसडे। वेडनेसडे असाइन करते हैं तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स कि वी हैव फाउंड द सॉल्यूशन। हमने सभी वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज असाइन कर दी एंड सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहे। तो व्हाट्स आवर सॉल्यूशन हियर, solution of this ESP, तो सॉल्यूशन इज ए को आप मंडे साइन कर दो, बी को आप ट्यूसडे साइन कर दो, डी को आप वेडनेसडे साइन कर दो, सी को आप वेडनेसडे साइन कर दो, डी को आप वेडनेसडे साइन कर दो, ई को आप मंडे साइन कर दो, एफ को ट्यूसडे एंड जी को वेडनेसडे, and this will be a perfect solution for the CSC. So that's how we find solutions. 2 minutes. So this is how we find the solution for the CSCs. Okay. So with this, let's stop here and we'll continue for the next lecture. This is all we need to know about the CSPs. We'll continue to the more details can be found in the slides. We'll talk about more things in the next lectures, where we'll start talking about a new chapter or new topic in the